हाय गाइस, दिस इज़ अभिजीत एंड आई एम बैक विथ माय वीडियोस। थोड़ा इशू हो गया था पिछली कंपनी के साथ विच जिसके चैनल पे मैं पोस्ट कर रहा था मेरी रेगुलर वीडियो, दैट्स वाई थोड़ा ब्रेक आ गया था। एंड अभी जो भी मेरा पहला मटेरियल था दैट्स नॉट ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू पुट इट ऑन यूट्यूब एज वेल सिंस दैट वॉज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल। काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए थे, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, सो जल्दी वो वीडियोज़ भी अवेलेबल हो जाएंगे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड इन दिस वीडियो जो भी मेरा अभी बड़े से ब्रेक के बाद आई एम पुटिंग माई वीडियो ऑन यूट्यूब। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि सर्टिफिकेशन जो भी CCNA सर्टिफिकेशन है, सिंस आई एम नेटवर्किंग इज़ माई मेन स्ट्रीम, सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्टिफिकेशन इटसेल्फ। कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को। आई एम इंटरेक्टिंग विथ लॉट ऑफ पीपल इन माई वर्कशॉप्स, इन माई ट्रेनिंग्स, एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि सर्टिफिकेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. I hope you like this video and enjoy it. So the first thing I would like to talk about is to choose the right certification. Yes, so as you guys know कि there are a lot of certifications and there are a lot of companies available who provide global certification. Like Cisco एक है, फिर Juniper है, then VMware, उसके बाद Oracle है, Citrix है, Microsoft itself. सो कई सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग सर्टिफिकेशन आपको ऑफर करती है, एंड आई लाइक टू सजेस्ट टू चूज़ द राइट सर्टिफिकेशन विच यू वांट. And I personally believe कि if you are focusing on the networking, then Cisco is the best. CCNA can help you get a job and CCNA can help you make career in networking. ठीक है, so सबसे पहली चीज़, and there are not only like CCNA कोई भी कर लो, there are other like different tracks available in the CCNA itself. जैसे कि routing and switching is the first, then there is security, फिर है voice, देन देर इज़ डेटा सेंटर, वायरलेस, ऐसे कई सारी ट्रैक्स हैं जो अवेलेबल है सिस्को के फॉर CCNA, CCNP, CCI, एवरी डैम ऑफ सर्टिफिकेशन दे हैव इन देयर लिस्ट. सो CCNA करते वक्त आई सजेस्ट यू टू चूज फाउंडेशन. लाइक फाउंडेशन इज द मेन थिंग which you must have to clear first, and routing and switching is the foundation itself. So I'd like to suggest you कि CCNA का routing and switching सबसे पहले कर लो एंड देन गो फॉर एनी अदर. बिकॉज कई सारे लोग हैं जो सिर्फ हैकिंग एंड ऑल स्टफ पढ़ने के लिए दे ऑफर द ग्लोबल सर्टिफिकेशन लाइक सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, CEH इज़ देयर, देन CHFI इज़ देयर. सो ऐसे कई सारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के भी कई सारी चीज़ें हैं जो EC काउंसिल एक कंपनी है जिसके द्वारा ऑफर किए जाते हैं. बट बिफोर ऑप्टिंग फॉर CCNA सिक्योरिटी, CCNA का भी एक अपना लाइक सिक्योरिटी के लिए सर्टिफिकेशन आता है विच हैज़ सिक्योरिटी इटसेल्फ एज अ नेम. सो CCNA के सिक्योरिटी भी जो लोग करते हैं, बिकॉज आई एम मैंशनिंग दिस थिंग क्योंकि कई सारे लोगों को मैंने ऑप्ट करते हुए देखा एंड पूछते हुए देखा. आई लाइक रिसीव्ड लॉट ऑफ लाइक मैसेजेस रिगार्डिंग दिस ऑन माई व्हाट्सएप सिंस आई एम अ टेक्निकल ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकर. सो मैं कई सारी जगहों पे जाके अपने सेशंस देते रहता हूँ एंड मुझे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं लोग फॉर आस्किंग कि कौन सा सर्टिफिकेशन करें, एंड दे वांट टू लाइक बी लाइक एथिकल हैकिंग एंड ऑल. So before choosing security as your certification, go for routing and switching. Or before choosing any other certification, go for routing and switching. क्योंकि routing and switching is the foundation of networking. उसके बगैर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते. So do routing and switching CCNA certification first, and then switch to any particular track. Then the next thing I would like to talk about is to set your goal. क्योंकि यू हैव टू स्केड्यूल योर सर्टिफिकेशन एंड यू हैव टू स्टडी इट, एंड आपको जो भी डेट आप सेट करोगे एग्ज़ाम की, वही डेट पे आपको जाके एग्ज़ाम देनी है. येस, यू हैव एन ऑप्शन, आई नो दैट, कि आप यू कैन चेंज द डेट ऑफ योर सर्टिफिकेशन. अगर आपने 3 महीने बाद वो सर्टिफिकेशन की डेट फिक्स कर ली है एंड आपके मन में आया कि अभी नहीं देना, यू कैन चेंज इट, बट इन दैट वे यू आर नेवर गोइंग टू गेट सर्टिफाइड. क्योंकि until unless you pressurize yourself, you set a goal, you cannot accomplish it. So I'll suggest you to fix a goal, study for that hard time. Doesn't matter वो कितना दूर का है. You can set a goal for 6 months, you can set a goal for 1 year. Usually it takes 3 to 4 months. 4 months I'll say to complete the CCNA certification की पढ़ाई. CCNA की पढ़ाई करने के लिए अराउंड 4 महीने लगते हैं. You can set a goal of 6 months. एक 1 year kind of a long goal. काफ़ी लंबा हो जाता है वो. सो यू कैन गो फॉर 4 महीना और 6 महीना ड्यूरिंग दिस पीरियड. अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो यू कैन जस्ट सेट योर गोल और यू कैन जस्ट फिक्स योर एग्जाम डेट विच कम्स आफ्टर 6 months, एंड दैट्स अ हेल लॉट ऑफ अ टाइम, and you don't have to worry about studying for 8 hours or 10 hours continue in a fucking day. You can just go for 2 to 3 hours a day,
And you can also take weekends off, because after all you are a human being, you need rest. Don't pressurize yourself by continuously mugging or by continuously studying it. You can just choose to study for a couple of hours in a day, and you can just take a day off, which is very important for you to be neutralized before getting back to study. So you can take a Saturday, Sunday off and enjoy, and then get back to studies from on the weekdays. That's going to prepare you, that's going to help you prepare for the certification. There's nothing to worry about, like after, like about studying for much more hours. So yeah, that's fine. You can just study for 2 to 3 hours in a day, and after in 4 months you can just complete it and then apply for CCNA certification. Then another thing I like to suggest you is to practice more and more. Since CCNA certification is completely focused on the real world scenarios, you need to practice it a lot. And I know you don't have or you cannot afford the real devices of Cisco to practice it. There is a simulation software, or there are pretty good simulation softwares available in the on the internet. You can just find Cisco Packet Tracer is the best. Then you can also opt for GNS3. Then these two are the software which you can practice all the way along, and that will completely help you to complete your CCNA studies. There is no other software which must be used. Cisco Packet Tracer itself is going to help you with the practicing thing, and you always have to practice a lot. There are also pretty much of theoretical concepts which include IP configuration and subnetting. Subnetting is the major thing which you have to get cleared up with. If you don't know how to subnet the networks with all the classes, then you are completely not going to get certified, or you are not going to get in the corporate world if you don't know subnetting. So that's the thing that you can completely focus on practicing a lot, like in 2 to 3 times in a day, and that's going to help you a lot, believe me. And the last thing I'd like to talk about is to use study materials, a lot of study materials. Yes, don't just fade away by using a book, by using some videos. That's not enough for CCNA certification. I have done it, but that was kind of hard for me, fucking hard for me to study that with just single one book. Because at my time I was 17 years of old and I was just having one book with me. I didn't know how to use, or I didn't have had any contacts to use multiple books. So you can just and I suggest to use CCNA study guide of Todd Lambley. That's the best book I have ever came across for CCNA certification. Yes, there are books available by Cisco Press itself, but CCNA study guide by Todd Lambley helped me a lot, and right now still it helps people a lot. And then you can also use videos of CBT nuggets. They are available on YouTube, they are available on torrents. You can just go and download it. Then the next thing I'd like to suggest you to practice for question banks. Yes, since CCNA is a multiple choice question like exam, there is no theoretical paper you have to apply for. You just go ahead and go to a Pearson View Center. Then you can just apply for the exam and give it on a computer by just clicking and by just typing on your keyboard. There is no paper you have to write. Okay, so that's what you can focus on by studying multiple like question banks, and by solving them you can like increase the chance of getting passed. And that's all from my side, guys. This was all about I wanted to talk about, and I wanted to suggest you guys before getting any kind of global certification. If you have any doubts, you can just drop down the comments right below there, and I'd like to, if you want any kind of study material, you can just contact me in the comments below. I'll share you on my cloud, and I'll be coming back with you guys with more such videos, and I hope you enjoyed it. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it, share it with your friends. It's going to help them a lot. This is Abhijit Bakale. Thank you.